आज हम लोग माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 10th का 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक है ना। पिछली वीडियो में हम लोग इसके इंग्लिश जो है वार्मिंग अप चिट-चैट देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इसका इंग्लिश वर्कशॉप देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है वू एम आई, मैं कौन हूँ। ए आई एम द वॉशर मैन सन। वू एम आई, मैं जो हूँ धोबी का बेटा हूँ। कौन हूँ मैं। आंसर सीताराम। आई एम द ओनर ऑफ द बैंक। वू एम आई, है ना, मैं जो हूँ बैंक का ओनर हूँ। कौन। सेठ गोविंद राम। आई एम द स्वीपर। वू एम आई। नाथू। आई एम द फ्रेंड ऑफ मिसिज श्रीवास्तव। वू एम आई। मिसिज भूषण। आई एम द हेयर ड्रेसर। वू एम आई। दीपचंद। आई हैव अ क्रूक लैक। वू एम आई। ओल्ड गणपत द बेगर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ पीपल नगर बैंक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट है जनरल मर्चेंट्स, बैटल सेलर, द ज्वेलर, कस्टमर्स ऑफ शॉप, द बैगर। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग एंड राइट द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इसका मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है एक ग्रुप ए और ग्रुप बी में से जोड़कर इस तरीके से। फर्स्ट ऐसा बनेगा, सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब दैट माई सूट नाथू। According to Mrs. Bhushan, it was the hottest summer in the history of People Nagar. Govindram was holidaying in Kashmir. The manager told the customer to go home and come back the next day. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट हु सेज टू होम, किसने किससे कहा। ए है डोंट रेज सच डस्ट। आंसर सीताराम द वॉशरमैन सेड दिस टू नाथू द स्वेपर। बी है who would you have thought the bank would collapse? Answer, Nathu said to himself. See, where did you disappear? Mrs. Bhushan said this to her husband. The bird has flown, the elderly gentleman said to Deepchand the barber. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, why was the manager of the bank in a dilemma? Write down in 5 to 6 lines in your notebook. Answer, the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in a dilemma because people of the town were demanding their money. Emergency funds could not only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he was not sure he could pursue the crowd to wait until then, and there was no way of contacting Seth Govindram on his houseboat in Kashmir. क्वेश्चन नंबर 6 है क्रॉस आउट द ऑड मैन। ऑड मैन आपको निकालना है स्वीपर, हॉलीगन, बैगर, डिक्लेयर, लॉकर। तो इसमें से आपको डिक्लेयर निकाल देना है। हरियडली, कैशली, सैलरी, डेफिनेटली, सडनली, तो इसमें से सैलरी निकाल देना है। इमीनेंट, लेटेस्ट, पावमेंट, ऑफुल, शॉकिंग, इसमें से पावमेंट निकाल देना है। मॉर्निंग, स्कैटरिंग, रेजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग, तो इसमें से मॉर्निंग निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट। आंसर देखिए, कस्टमरी टूर, फोटोग्राफी, शॉप, ग्लास विंडो एंड क्रूक क्लैक। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। वर्ब क्या है, पे, नाउन पेमेंट होगा, एडजेक्टिव पेएबल होगा, एडवर्ब में से कुछ नहीं आएगा। वर्ब में सेट्स, देखिए इसके बाद सेकेंड, सडन, सडन, सडनली, डिक्लेयर, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेबल, चीरफुल, चीरफुल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन योर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, सबके बारे में आपको कुछ कुछ सेंटेंस लिखने। फर्स्ट है नाथू। नाथू वॉज अ स्वीपर वर्किंग विद द पीपल नगर बैंक ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम। ही वॉज annoyed because the bank had not paid his salary though they were the last days of the month. He was sweeping hurriedly and carelessly because he was not happy with the owner. He was thinking of leaving that job. Mrs. Srivastava needed a sweeper. She was told that the sweeper boy at the bank was leaving his job tied to irregular payment. This news by Mrs. Srivastava and Mrs. Bhushan, her friends, was spread, and within minutes a rumor of bankruptcy spread into People Nagar. See Seth Govindram. The bank in People Nagar was owned by Saint Govindram. When the rumor of the bankruptcy spread in the town, Seth Govindram was holiday in Kashmir. Meanwhile, the people in the town said that Seth Govindram had fled, or absconded, or died. They did not bother to find out the truth behind the matter. D है सीताराम. Sitaram was a washerman's son. He used to deliver fresh clothes to every home.
He plodded barefoot along the road to deliver a big bundle of clothes on his head. He was a helpful person. He was glad that he would be of service to both customer and his friends Nathu. Question number 10. Expand the theme in a write-up of about 20 lines. Rumors are spread by fools and accepted by greater fools. है ना, जो गलत खबरें फैलाता है वो तो फूल बेवकूफ़ है ही है, लेकिन जो उसे एक्सेप्ट कर लेता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो उसके ऊपर आपको 20 लाइन में लिखना होता है। आंसर देखिए, सम आइडल पीपल स्प्रेड रूमर्स, दे देमसेल्फ डू नॉट नो द ट्रूथ और फैक्ट इन द न्यूज़, मैनी अ टाइम्स दे हैव नॉट हियर्ड और सीन anything but repeat some story news to people without believing in themselves. A rumor in any talk, report or unverified statement, falsehood, gossip or an exaggeration of the truth. So we can say that those who start spreading such rumors are fools. Any kind of rumor does not stop at one place. It goes from one person to another and one place to another. Not only ignorant people fall prey to rumors, but also some educated, knowledgeable persons believe them. These people are greater fools because they never care to examine if that particular rumor is reliable, true, or if it can stand to their reason. Before you accept any such rumor, be sure it is a fact, nothing untrue and unreliable in it, or you will have to face unpleasant memories and experiences. So keep away from rumors. Books are our real friends. Books are our never failing friends. We need books for our mind. They are our closest friend who give us precious wealth of knowledge and experiences. They deal with various subjects in the world and on every aspect of our life. They are the world of treasures. The books entertain us, advise us, give comfort and contentment to our soul, and most importantly, they impart wisdom that helps us throughout our life. They help you in your sufferings, depression, and soothe your soul. They give you company when you are alone. They are your real companions. They take us to the journey into the beautiful world and help you to achieve your success like true friends, like true best friend. Good books also teach you a quality that lasts long in your life. They give a confidence and courage to speak, to improve your language skills and develop your personality. They also help you to avoid your mistakes, flaws, teaching you wise conduct and wise tolerance towards other. Question number 11. Project. Collect the names of books written by Ruskin Bond. The names of books written by Ruskin Bond: The Room of the Roof, Blue Umbrella, Rusty, The Boy from the Hills, Road to Missouri, Tales and Legends from India, Our Trees Still Grow in Dehra, The India I Love, Maharani, The Flight of Pigeons, Dust of the Mountain, The Book of Simple Living, The Kite Makers, All Roads Leads to Ganga, Season of Ghost, Vacancy in the Valley, etc. तो ये थे इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो मैं आपको बताया इसकी इंग्लिश वर्कशॉप। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2.3 ट्विंस के जो है हम लोग चिट चैट देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर। बाय।